subscribe my channel for more videos. Alaikum everyone. Assalamualaikum everyone. I am very happy today. No, I am making cupcake with my mommy. I am making cupcake with my mommy. You have to follow this recipe. You love it. I am sure. I love this. I am Allah. I am sure. You love this recipe. Try it. I am happy for it. My channel. I am my channel. आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें 1 कप मैदा, 1 कप चीनी, 1 कप ऑयल, 2 अंडे, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। Let's start today's recipe. For cupcake we need eggy lining in the cup. This in the cup line side. Line side we put this, and then we do cupcake with my friend. Then so here, and then we will put this in my friend. In my friend we do. I'm making for my friend and me, and we put this in other one here. And then we do in my friend after we grow up. Oh! We grease again. Now we grease again. Step number 2. Step number 2. We need a bowl. Wow. We put oil in it. Now we put sugar in it. Where we are falling in. We will beat this. When my mommy will beat it, then me. Then it's my turn. Put eggs in it. Eggs. Now we beat it again. With the beater. 5 minutes. Let's do it. Go. We need teaspoon this one thing. अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट को ऐड करूँगी ताकि अंडों की जो स्मेल है, जो एक स्पेसिफिक इसका एरोमा होता है, वो ख़त्म हो जाए। आप कोई सी भी साइज़ का स्टेनर ले लें, ठीक है, और उसके अंदर आपने ऐड कर देना है ये 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, ये आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये 1 कप मैदा है, ये आप थोड़ा थोड़ा करके इस स्टेनर से पास करके इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। एक ही वक्त में आपने ये सारा ऐड नहीं करना, आप हाफ ऐड करें, उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करें। लेकिन जब आपने मिक्स करना है
तो इसमें आपने बीटर को यूज़ नहीं करना। और सेकेंडली जब आप मिक्स करें तो आप हल्के हाथ से करें और इसकी एक ही डायरेक्शन रखें, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, आपने इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना। I will do. ओके, ना फातिमा इज सेइंग कि मैं इसको मिक्स करूँगी। ओके फातिमा, यू कैन मिक्स इट। ओके, यू मिक्स इट। अब रिमेनिंग आधा मैदा भी आप इसके अंदर शामिल कर दें। तब्दील स्टॉप। इसी तरह से आप इसको एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथ से मिक्स करें। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और आप ये देखें कि इसमें किसी किस्म का कोई लम्स नहीं है और ये बहुत अच्छे से बहुत स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया। We like a chocolate. Yes, it's like a chocolate. Can I eat? Yes, you can taste it. Okay. Okay. अब फातिमा इसको टेस्ट करेगी। फातिमा को यूँ ही ये पसंद है। फातिमा, you can taste it. Like this. Yummy. It's yummy. Okay. Now, अब आप इस केक के बैटर को किसी भी, आप स्पून ले सकते हैं, कोई भी जो है वो आप स्कूप ले सकते हैं जिसकी मदद से आपने इसको इन लाइनिंग्स के अंदर, इन कपकेक लाइनिंग्स के अंदर ऐड कर देना है। लेकिन जब आप इसको ऐड करें तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये 2/3 तक तो फिल हो, लेकिन इसका एक हिस्सा जो है वो एम्प्टी होना चाहिए, ताकि जब ये केक राइज करेगा तो ये बाहर ना निकले। कुछ केक्स को मैं फिल करूँगी और कुछ को फातिमा फिल करेगी। We are making the cupcake. Let's put this in cup. We need this and put it in here, and then we यहाँ मैंने और फातिमा ने मिलके इन पेपर कप्स को जो है वो फिल कर लिया है। अब आप इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो एक्सेस एयर है वो रिमूव हो जाए, और जो बाकी का बैटर बचा था वो मैंने इस पेपर कप के अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसको बेकिंग के लिए रखूँगी, और बेकिंग के लिए मैंने ओवन को 15 मिनट के लिए 200 डिग्रीज़ पे प्री हीट किया है। अब मैं इन कप केक्स को उसके अंदर रख दूँगी और मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक करूँगी, और 15 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर लूँगी कि अगर मुझे ज़रूरत हुई तो फिर मैं 5 मिनट के लिए या 2-4 मिनट के लिए इसको मज़ीद टाइम दूँगी। It's so yummy. It's so yummy. I like it. Dumda. My cupcake is ready. So yummy. I like it. Yummy, yummy, yummy. La 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 la. Nom 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 nom. Good job, Fatima. Well done. I have made it so yummy. Nom nom. This is for me only. Try my recipe. I love you all, and I love you all too. No, I tried it and then I will do. Eat it like good. Good job, mommy. Well done. They're so tasty.
So it's so yummy. Try my recipe. Love it. Don't forget. Don't forget. Watch my videos. Comments me, and comments. Give me feedback after trying this. Love you all. Bye bye. See you next time with a new recipe. See you next time. Bye bye. Enjoy it. यहाँ पर हमारे जो हैं वो कप केक्स रेडी हैं और फातिमा जो है वो एक खा चुकी है, एंजॉय कर चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट बना है। ये देखिए ये किस कदर सॉफ्ट है और ये बहुत डिलीशियस बनेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बाज़ार के और बेकरी के कप केक्स जो हैं वो भूल जाएंगे। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें, आप इनको टी टाइम में दें, आप मेहमानों के सामने इसको सर्व करें। मैं आप इसको तोड़ के दिखाती हूँ और आप ये देखिए ये किस कदर स्पॉन्जी है। देखिए कितना सॉफ्ट है। मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। लुक, बहुत मज़े का बनेगा। बिलीव मी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो मिलते ही नेक्स्ट टाइम हम एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। Subscribe my channel for more videos.